Hello dear students, I hope you all are very fine today and you have a very good morning. Okay, so let us continue with our very interesting topic, that is light, shadows and reflections. Yes, we had seen some interesting facts about lights, about shadows and all. Let us continue with it. That is with a pinhole camera. So first there is an activity to make the pinhole camera. It is very simple to make a pinhole camera, and believe me, it is very interesting to see various objects through that pinhole camera. Try to make it at home. It is not that hard. Simple है. क्या करना है, just take we will need two rectangular boxes. Okay, but वो boxes ऐसे हो कि they should differ in the size. Like one box should fit in the other. Both should be rectangular and one box should fit into the other. और वो ऐसे फिट होना चाहिए कि वो exactly फिट होना चाहिए. There should be no gap in between. So it should fit like this. Okay. So you have to take the two rectangular boxes और उसको क्या करना है, पूरे it should be packed from all the side. अभी क्या करना है, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसका जो छोटा साइड है, यू कैन सी इट इन द डायग्राम, इन द ऑन द स्मॉलर साइड ऑफ दैट रेक्टेंगुलर बॉक्स, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, एक बड़ा होगा एक थोड़ा छोटा होगा. On the bigger box you have to make a small hole. On the smaller side of that rectangular box, the bigger rectangular box, you have to make a small circle, a hole. Okay, and on the other, the smaller one rectangular box, on that, on the smaller side only, you have to make a square as shown over here. The figure A shows the whole circular hole, and the figure B, that is a smaller rectangular box which is showing a square made on it, and just fit the squared box, the smaller one, inside the bigger one. Just fit it like this. Yes, how to fit it? Whole or square, वो एक दूसरे के साथ आने चाहिए, like this, which is shown in the figure C. You have to just fit it inside the other box. And what you need to do, try to see the object through that. What you need to do, just consider an object. एक जैसे कि tree है. If you are looking out of the window, you see a tree which is over there. Okay. So that tree, if you are watching, just see it through the pinhole camera. अभी आपको क्या करना है, वो जो pinhole camera है, this aeroplane is disturbing a lot. Fine. So what you need to do, just we have to take the two boxes, और आपको एक far side, जैसे कोई tree है जो आपको window से बाहर दिख रही है, what you need to do, you need to see through that pinhole camera. You to see through that pinhole camera. और वो जो दोनों boxes है वो ऐसे थोड़े आगे पीछे you to do. Why you need to do that? To get a clear image. जब तक आपको clear image नहीं दिखती उस object की, you need to just move that boxes. That smaller box you have to take it out, then inside and that. Just adjust it so that you see a very clear and sharp image of that object. Just see. You can see in the diagram and just try to observe कैसे दिखती है वो जो image है object की. How do you see that object? Of course वो उतनी तो नहीं दिखेगी, वो तो छोटी दिखेगी. The object will be seen smaller. और एक interesting fact, वो upside down होगी. The image will be upside down. उल्टी image दिखेगी. Tree आपको उल्टा दिखेगा. You can see it in the diagram. The tree जो है उसकी image pinhole camera में कैसे दिखती है? It is अपसाइड डाउन. हाँ, यस, वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल. ऑफ कोर्स जिस साइड से आप देख रहे हो वो कैसे होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए. मतलब दैट साइड शुड बी ओपन, देन ओनली यू आर एबल टू सी. एक होल बना के फिर देन यू आर एबल टू सी. सो यू कैन सी दैट द इमेज इज अपसाइड डाउन. दैट मीन्स उल्टी इमेज बनती है. इजंट इट इंटरेस्टिंग? यस, लाइट is very interesting, and all the things about light are much more interesting. Okay, then if you want to see the image of sun, इतना बड़ा sun है उसकी image बनानी है. बड़े से sun की image कैसे बनाएं? Yes, it is possible. For that you don't need to make the pinhole camera and all. You just need a simple card sheet paper, a cardboard. You need a cardboard. Okay, cardboard लो और उसको ऐसे छोटा सा hole करो. Just make a small hole inside that cardboard. What you need to do, sun जहाँ पे है, hold the cardboard in front of the sun. Hold the cardboard in front of the sun and allow फिर sun की जो image है that will be formed. अभी आपको तो पता है cardboard की क्या होगी, shadow आएगी, right? There should be wall or there should be some screen. You know these things now. There should be screen or a wall on which the image will form.
क्या होगा, वो कार्डबोर्ड की तो इमेज आएगी, राइट, द लाइक शैडो, द शैडो विल बी फॉर्म ऑफ दैट कार्डबोर्ड ऑन दैट स्क्रीन, एंड इन बिटवीन जहाँ पे होल बनाया है वहाँ से तो लाइट जाएगा, राइट, दैट थ्रू दैट द लाइट विल पास, एंड हाउ यू विल सी अ सर्कल, आजू बाजू शैडो होगी, एंड इन बिटवीन देयर विल बी अ सर्कल, दैट इज़ द इमेज ऑफ सन। इतने बड़े सन की हमने इतनी सी इमेज बनाई, यस, सो दिस इज़ हाउ वी कैन गेट द इमेज ऑफ सन। अभी क्योंकि सन तो पूरा है, पूरा गोल है, इसीलिए यू सी द इमेज टू बी सर्कुलर। बट जब एक्लिप्स आता है, एक्लिप्स पता है आपको, सीखा नहीं होगा लेकिन यस यू मस्ट हैव लर्न अबाउट एक्लिप्स। जब एक्लिप्स आता है तब क्या होता है, सन थोड़ा सा, द पार्ट ऑफ सन इज नॉट सीन, राइट, द पार्शियल और होल सन इट में डिसअपियर, वो आपको पता है, जस्ट नाउ वी आर सीइंग द एक्लिप्स बिफोर 3-4 months। तो when there is eclipse, of course it is always advised not to see the sun directly, कभी भी सन को डायरेक्टली देखना नहीं चाहिए, and in the eclipse तो we should definitely avoid looking at sun by the naked eyes, okay, डायरेक्टली सन की तरफ कभी नहीं देखना है। तो if we want to see the eclipse तो क्या करते हैं हम, एक्सरे लेते हैं, राइट, या फिर देयर इज़ वन मोर थिंग, एक्सरे से तो हम खुद देखेंगे लेकिन यू कैन शो इट टू अदर्स। क्या करना है, यही सेम कार्डबोर्ड लेना है विद अ पिन होल, विद अ स्मॉल होल इनसाइड दैट, और ऐसे ही जैसे सन की इमेज बनाई वैसे ही बनानी है। टू योर सरप्राइज यू विल नॉट गेट अ सर्कुलर इमेज ऑफ सन, you will get say how is the moon seen sometimes like this, and not like this, or a partial part will not be seen, it will not be circular but some part, जैसे ही eclipse होगा in the same way you will see the image of the sun, it is very very interesting, right, so that is very interesting, you need to just next time whenever sun eclipse will occur, no, definitely try this thing, and during eclipse also you can see in the nature also, if you see there are pinhole cameras in the nature, you can see it in the diagram, or if you have seen जैसे trees होते हैं, बहुत सारे dense trees है, उसके नीचे if you see सर्कुलर फॉर्म में से सनलाइट आती है, राइट, द सनलाइट फॉल्स इनसाइड, वैसे तो शेडो है पूरी जगह, लेकिन इन बिटवीन ओनली यू सी द सर्कुलर that the light is falling, that are the images of sun, yes, so many images of sun। क्या होता है, trees के जो और leaves होते हैं, through that leaves if there is a small space for the light to pass through, then the light will pass and the image will be formed on the road will act as a screen, no, right, जहाँ पे भी obstacle आ गया वो हो गया हमारा screen, and yes we can see that gaps which act as the although they are irregular in shape, जो gaps अभी leaves तो कैसे भी randomly they will be present, okay, and so the gaps will be irregular but the image will always form to be circular, interesting, right, so we know there is one thing that light always moves in a straight path। why this happens, because light ऊपर से आया सीधा नीचे, light always travels in a straight path, light कभी ऐसे 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 करके नहीं जाता है, light will always travel in a straight path। so let us do an activity for that। एक candle लेनी है and take a pipe should be straight, okay, pipe should be very straight, so in the first case if you see, hold that candle, you have kept that candle, और कैंडल की फ्लेम को उस पाइप के थ्रू देखने का ट्राई करो, फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द पाइप यू ट्राई टू सी, आर यू एबल टू सी, yes, because light is traveling through that stream, but when you bend the pipe you will not be able to see the flame, क्यों, you can see in the diagram the light travels only in the straight line, वो पाइप बेंड किया तो लाइट ऐसे बेंड करके तो नहीं आएगा, light will pass straight, always the light will pass straight, so this shows you will not be able to see the light through the bent pipe, this shows that light always travels in a straight line, keep in mind, light travels in a straight line। the next experiment, okay, experiment is not there, it is just before that experiment let us start with the mirrors and reflections। do the mirror reflect, yes it reflects, टॉर्च लो, मिरर पे ऐसे होल्ड करो, इट विल रिफ्लेक्ट द लाइट, मिरर रिफ्लेक्ट्स द लाइट, टॉर्च हाँ रिफ्लेक्ट, लेकिन लाइट विल जस्ट पासिंग स्ट्रेट ही जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद ऑल्सो इट विल पास स्ट्रेट, मिरर रिफ्लेक्ट्स द लाइट, हेंस यू कैन सी योरसेल्फ इन द मिरर, जो लाइट आप पे आ रही है that is going on mirror, it is reflecting back, going into your eyes and you see the image of yourself। it is very simple and it is very interesting।
So mirrors reflect the light. Simple activity करनी है. You will need 3 friends, yourself and 2 again, two more people. Okay, so what you need to do, you need to you need to hold a torch. You need to hold a torch in your hand. As I said you, what you need to do, you have to hold a torch in your hand. और एक friend को सामने खड़ा करना है by taking a mirror in the hand as shown in the figure. Or okay, you have shown in the figure. So what you need to do, you have to hold a torch और वो torch को किस पे where you need to focus that torch, you need to focus that torch on the mirror. Okay, आपका friend mirror लेके खड़ा है, you just take and try to focus that torch, उसका जो light है वो mirror पे डालो. So if you will observe that the light or the torch light which is going on that mirror will get reflected. और जो थर्ड आपका जो फ्रेंड है विच हु इज स्टैंडिंग ऑन हिज बॉडी, यू कैन सी द रिफ्लेक्टेड लाइट. सो दिस इज हाउ द लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड. ओके, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल हो सकती है. इफ यू आर परफॉर्मिंग दिस इन द डार्क रूम, यू कैन ऑल्सो सी द डायरेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट कैसे स्ट्रेट जा रही है. यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्व दैट. और यू कैन व्हाट डू वी कंक्लूड अगेन, मिरर में से लाइट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया. दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी, दैट मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट. पहले लाइट was passing through this direction, after falling on the mirror it will change its direction, right? So mirror changes the direction of light which falls on it. This is what we learned from this experiment, right? Then let us see the next experiment to see that light traveling along a straight line and it gets reflected from a mirror. ये और एक बार हमने देखना है. So very simple, what you need to do, एक mirror लेना है, छोटा सा mirror. Just keep that mirror like it is shown in the diagram or in the figure. You need to keep the mirror. Okay, और mirror रखने के बाद hold a comb. Hold that comb in the position which is shown in the figure. Hold a comb. और also you see वो ऐसे slanting है, comb is like that and the mirror is like this. और क्या करना है, मिरर opposite side है, comb तुम्हारी side है, और एक टॉर्च लेनी है and allow to fall the light of that torch on the comb. You see how nice pattern is observed of that comb. comb की shadow आई क्यों, कैसे आई shadow? When you are allowing the light to pass, the light is passing through the comb, so the shadow of comb will form. Again the light is getting reflected from mirror and again the shadow is formed. You see how nicely two shadows are formed and they are making a mesh in between, mesh with each other. So this is how we can perform the activity. It is very interesting. It is simple also to perform. You perform at home and try to see the magic, and do not forget to take a video or a photo and send to me. Okay, try to do this activity. They are very simple activities and you will definitely enjoy doing that activities. And from this specific activity what we learn is that light travels in a straight line and mirror reflects the light, or mirror changes the direction of light. So this is how we have just been to the very interesting world of lights and shadows. Okay, so just keep studying, stay at home and stay healthy, stay safe. Goodbye.